गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब आज हम आपकी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास लेने जा रहे हैं और आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ वो सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जो आपके पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जितनी भी थ्योरीज हैं आपकी सीडीपी में, आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी बुक क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको उसको बहुत अच्छे से कर लेना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो देखिए कि जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका लर्निंग एंड एक्विजाइजेशन। तो लर्निंग क्या है, एक्विजाइजेशन क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या है। देखिए, जब हम किसी when we learn something about practice through environment or through why their activities is called learning। यानी जब हम किसी चीज को अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, अपने अभ्यास के थ्रू सीखते हैं तो वो क्या कहलाती है, लर्निंग। और एक्विजाइजेशन, एक्विजाइजेशन मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को अपने एनवायरमेंट से डायरेक्टली समझ जाते हैं, डायरेक्टली ग्रहण कर लेते हैं, तो वो हमारा एक्विजाइजेशन कहलाता है। अब आपको लग रहा होगा कि हमारी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है और मैम हमें हिंदी में क्यों बता रही हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अगर मैं फुली इंग्लिश में बताऊं तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी ये समझ में आए कि बेसिकली क्या बात कही जा रही है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा आप उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो अपने टॉपिक को, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में इसमें बात करते हैं और उसके बाद में अगर आपका कोई डाउट होगा तो उसको भी हम लास्ट में लेंगे। अभी मैं आपके कमेंट्स को नहीं देख पा रही हूँ, मैं आपको उसके में बाद में बताऊंगी। चलिए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा लर्निंग। एक मिनट, बहुत ही गंदा राइटिंग आ रहा है, इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। लर्निंग एंड एक्विजाइजेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक। अब देखिए, जब किसी भी सब्जेक्ट में आप सीटेट में इंग्लिश को अगर एज अ सब्जेक्ट चूज करते हैं तो वहां पे 15 मार्क्स के आपकी पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस करना बहुत ही इजी है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लर्निंग का कॉन्सेप्ट ही क्या है। तो पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, कि जो हमारा लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, ओके। तो देखिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स। अब देखिए, लर्निंग क्या है, लर्निंग एक प्रोसेस है। क्या, कैसा प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम जो हमारे पास अभी स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करते हैं और न्यू स्किल्स को सीखते हैं, न्यू नॉलेज को गेन करते हैं। चलिए मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट डाउन कर देती हूँ आपके लिए। लर्निंग is a process of
एक मिनट, acquiring new skill or knowledge and improving existing skills also। ठीक है, यानी लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू स्किल्स को एक्वायर और न्यू और नॉलेज को एक्वायर करते हैं, इसके साथ साथ जो हमारे पास जो स्किल्स होते हैं उसको हम इम्प्रूव करते हैं। An individual undergoes a change in his or her knowledge and behavior on account of learning. While we are everyone is different from one another in acquiring skills means everyone has different rate or speed of learning। देखिए, अब मुझे आपको कुछ टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में बताने होंगे, लेकिन मैं बाइलिंगुअल रहने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि ये सभी के लिए क्लियर होता चले कॉन्सेप्ट। देखिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस व्हाई वी एक्वायरिंग नॉलेज एंड वी एक्वायर नॉलेज फ्रॉम आवर एनवायरमेंट एंड you know it very well, everyone is different and their ability is also different to adopt things. So certain factors such as environment, learners ability, motivation, teachers capabilities and way of impact knowledge all impact a person's learning experience. It means your learning affects from various factors such as teacher's ability, your environment, motivations, teacher's skills and your mental status। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी मेंटल एबिलिटी को, लर्निंग को इफेक्ट करती हैं। उसमें आपकी एक तो लर्निंग प्रोसेस में आपको कौन कौन सी चीजें आप इफेक्ट करेंगी। सबसे पहले आपकी खुद की नॉलेज, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी टीचर की एबिलिटी है, इसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है वो आपका मोटिवेशन कैसा है, ये सारी चीजें उसको अफेक्ट करेंगी, उसका प्रभाव उस पर होगा। आप सभी जानते हैं कि 85 इयर्स सॉरी जो आपका माइंड है 85% 3 to 9 इयर्स की एज तक क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। are commonly drawn through not absolute necessary collaboratory or CPH is any language learning which acquired after the age of puberty will be slower and less successful than normal first language learning। All of you know that very well in uh, the starting year of our life, like 3 to from birth to 9 years, our mind is developing very fast and the physical changes take place. These abilities are very fast, so in this time our mental ability develop quickly. So in if you are focus on the time the progress of the child, it is more successful that after these years, because our mind develop 85 year at the age of 3 to 9 years। Types of learning,
There are such type of learning like types of learning. First is, how many types of learning? There are three types of learning. There are three types of learning. The first is motor learning. What is motor learning? If you have the curiosity to know what, how, where, then you are able to do more questions correctly than others. Motor learning. Most of our activity in day-to-day life refer to motor activities like walking, running, driving, climbing, etc. All these activities involve muscular coordination. It means all the activities involve muscular coordination is called motor activities. So there in these activities are walking, अब देखिए running, driving, climbing, etc. Second is verbal learning. What is verbal learning? वर्बल लर्निंग में क्या होगा? बताइए जरा. चलिए, verbal learning. This type of learning involves the language we speak, the communication methods
be adopt, that is signs, pictures, symbols, birds, sounds are the tools used in such activities. Verbal learning. It means learning that related to verbal communication, such uh, like signs, communication through signs, pictures, symbols, words, sounds. We use many things to communicate like that. Conceptual learning. There are three types of learning. The first is motor learning, that is related to motor activities. Second is verbal learning. Verbal learning involves the language we spoke as a medium of communication. And the third is conceptual learning. Conceptual learning. कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में आपका क्या आएगा? In this form of learning, in this of learning, we require higher order mental process like thinking, reasoning, intelligence,
with the use of these. Child learns different concepts. The next topic is factor of affecting learning. Factor that affect our learning. There are some factors that affect learning which is related to the learner. Factor related to learner are: first is to are learner's motivation determines the intensity of learning. It means your your learning decide the direction of your your motivation determines your learning. First is learner's motivation. सेकंड है learners capacity. Learners capacity. Learners third is learners interest and aptitude towards the subject. Next is journal health. Learners health. Health.
Next is learners attention, readiness, and willpower. These are the some factors that affect the learning of a learner, which is related to the learner's learning, which is related to learner. We are starting from the learning and acquisition concept of learning. What is learning? Learning is a process acquiring new skills and knowledge and improving existing skills. When we are improving our skills through practice, through exercise, it is called learning. There are three types of learning: motor learning, verbal learning, and conceptual learning. Motor learning basically related to the activities like running, driving, climbing, etc. And these activities basically related to our muscular coordination. It shows our muscular coordination with other body parts. And the next is verbal learning. This type of learning involves language we speak, and in this we improve our verbal communication through various methods like signs, pictures, words, and sound tools. And the next is conceptual learning. In the form of learning, we require higher mental process, because we when we think about something, reason, you find out the reason, and when we take decision, it is called conceptual learning. If we see something and we have the ability to express it in my own words, when I are able to learn something and express it my own word, it is called conceptual learning. Factor affect the learner's learning. There are we can divide it into two parts: factor related to the learner and factor related to the teacher. The first we are talking about the factor related to the learner. The factor related to the learn, first is motivation. When you are motivated, you learn everything. If you are not motivated, then there is no way to learn. So motivation is the most important for learn something. If you are motivated, you can easily learn everything. Learner's mental capacity. If you are capable, then it is also important for us. Learners' interest and aptitude toward the subject. If you are interested in any subject and your aptitude toward the subject, you are able to learn, because at the time you have the curiosity to know the subject. If you have the interest in the subject, you can easily learn, because you have something in your mind that you have to learn it at anyhow. If you are ready, then you can learn it easily. Thorndike's law also prove it. Learner's health. Learner's health is also very important, because if you are ill, then it is not, if you are ill, you are not able to learn anything. So your health is also a play a major role in your learning.
learners attention and readiness and willpower. It is also very important because if you are aware, you are able to learn the topic clearly. If you are ready, you can try again and again to understand. If you are not able to understand the topic, so readiness, willpower, attention is also important factor that affect the learner's learning. These are the some factors that are related to the learner. In our next class, we learn about the factor which is related to the teacher. I hope uh, it is clear to you to understand about learning. If there is any query, you can ask, and if there is any problem you are facing to understand the topic, you can also share with me. And if you are any problem, you can ask. आज का सेशन आपका यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी.